Mahakumbh where we worked together, and I saw him working tirelessly. Wherever we took him, he said, please use me wherever you want to put me in the front. So that, and because he went to the news camp, next day we had a flock of reporters coming in to record him and Andre. So with that, I want to welcome Jeremy, and I am wanting to start my questions. Uh, I am taking your permission to record this session because it will remain with us, and maybe more Yuvashaktis will be able to see that. Do I have your permission to record the session? Yes, of course. Did you want to translate it? Yeah. तो मैं उनकी परमिशन ले रहा था रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि बाकी लोग भी देख सके जो आज नहीं आए हैं. First question I am asking him, and then I will translate in Hindi also. You received your self-realization from Shrimataji in 1980. Can you share your experience of that moment and how it changed your life? I am asking him, मैं इनको पूछ रहा हूँ कि आपको 1980 में जागृति मिली, आपको वो अनुभव कैसा रहा, उसमें ऐसा क्या रहा जिससे आपका जीवन बदल गया? Over to you. Well, I was a young man. I was trying to find some meaning in life at the age of 22, 23. And wherever I looked, I couldn't find it. I mean, there was nothing in religion or in education or the knowledge. A little bit, I studied psychology. I thought if I could find some knowledge through psychology, I could understand the mind and then understand why we're here. But I couldn't really find anything. There was one or two things that helped. A lot of things helped along the way. Some music and some writing, some books, but nothing very spiritual as such. But then I was looking for a place to live in Brighton, in the south of England. And one lady invited me to come and live in her house, and Shimashi had a puja in this house just a few weeks before. So I didn't exactly get my realization from Shimashi directly, but it was like I was drawn to this house, and I got my realization there, and I started Sahaja Yoga from there. Okay, तो इन्होंने ये बताया कि उनको डायरेक्ट श्रीमाता जी के साथ में उनको रियलाइजेशन उनसे डायरेक्ट नहीं मिला, लेकिन जब वो यंग थे, वो अपने जीवन का अर्थ ढूंढ रहे थे, वो ढूंढ रहे थे कि कैसी कोई गहरी चीज कोई मिले उनको जिससे उनका आगे का रास्ता सुगम हो. ढूंढते ढूंढते उन्होंने म्यूजिक ट्राई किया, बहुत सारी चीजें ट्राई करी, और उसके बाद उनको कोई घर ढूंढ रहे थे जहां रहना चाहते थे. तो उन्होंने एक लेडी के घर में ढूंढा, फाइनल किया, और ये कोइंसिडेंस था कि जिस घर को इन्होंने फाइनल किया 1-2 हफ्ते पहले वहां पे श्रीमाता जी ने पूजा करवाई थी, साकार पूजा हुई थी. So I have translated till now, and what was your life-changing experience when you received your realization? Bhaiya, please unmute yourself. You'll have to just repeat the last sentence. I'm sorry. Yes. Now I muted. I didn't. I think the most important thing was that I had many questions, and although I didn't get specific answers, I felt as if my questions had been answered by getting realization. तो उनका कहना ये है कि उनके बहुत सारे सवाल थे, लेकिन बिना कुछ पूछे उनको वो सारे सवालों के जवाब मिल गए. The next question to you is, what were your most memorable interaction with Shrimata ji? Any personal advice or experience with her that deeply impacted you? कोई बहुत ही memorable experience श्रीमाता जी के साथ में जो बहुत असर पड़ा? That is my next question.
There were many occasions when we had the pleasure and the fortune to be with Srimataji at the beginning, because it was such a small group. But I think the most powerful experience was when once in India, Srimataji allowed us to bow down to her lotus feet, and when it was my turn, I put my forehead on her feet, and when I came up, I just felt my Kundalini rise up into the sky, into the dark sky with all the stars. It was just like a cosmic connection. So जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा कौन सा बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा जो उनको याद है, तो उनका ये कहना है कि क्योंकि बहुत कम लोग थे और उनको ज्यादा टाइम मिलता था एक एक लोगों को, और श्री माता जी हर एक को अलाउ करते थे श्री माता जी के चरणों में जाने के लिए, तो जब इनका टर्न आया और वो श्री माता जी के चरण कमलों में गए और अपना सर रखा, और थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने अपना सर उठाया तो उनको अपनी कुंडलिनी पूरी आकाश में सितारों तक जाती हुई दिखाई दी। वो उनके जीवन का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस उनको लगा। The next question which I want to ask you is, how was the Sahaja Yoga movement in early days of UK? What were some of the challenges and joys of spreading Sahaja Yoga at that time? तो मैंने उनको क्वेश्चन ये पूछा है कि Sahaja Yoga का जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ यूनाइटेड किंगडम में, लंदन के जहाँ के ये हैं, उस समय क्या चैलेंजेस थे और क्या आनंद था उसको सहयोग को फैलाने में। सहयोग को जो भी अभी हम जैसे प्रचार प्रसार करते हैं, ये भी बहुत एक्टिव लोग हैं, तो कैसे चैलेंज थे और क्या आनंद था? So the main challenge was that no one had ever heard of Sahaja Yoga. It was completely new, so we had to really start from zero. And but there was tremendous joy in the collective. We didn't feel any. It was so nice because we were a group of young people, all about the same age, and it was just fun. We just had fun postering, arranging programs, leafleting. We just had fun. So I think the problem is echoing, and you will have to unmute and mute, and I will also do the same so that it becomes okay for rest of the people. Moment you mute yourself, it becomes okay. So इन्होंने ये बोला कि सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उस समय सहज योगा किसी को मालूम ही नहीं था, किसी ने वो शब्द ही सुना नहीं था, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। और आनंद ये था कि सब लोग एक साथ श्री माता जी के साथ में थे, काम कर रहे थे, पोस्टरिंग कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो वो एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत अच्छा रहा। अभी बीच में दीक्षा ने हाथ उठाया। दीक्षा, आप कुछ पूछना चाहते हैं या एंड तक रुक सकते हैं? तो एंड में पूछ सकते हैं, या पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लो, अनम्यूट कर लो, पूछ लो आप। जी नहीं, वो कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है जी। The next question is related to travel. Shri Mataji sent many foreign Sahajogis to Indian villages to experience its spiritual wealth. Can you share what you learned from those journeys? The next question मैं उनको पूछ रहा हूँ कि श्री माता जी बहुत फॉरेन के सहयोगियों को इंडिया में ट्रैवल कराते थे, विलेजेस में भेजते थे कि यहाँ की जो भी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है उसको देखें, तो उस समय का कुछ एक्सपीरियंस वो शेयर करना चाहते हैं। ओवर टू यू। The main thing is that it's maybe something you take for granted is the knowledge and the depth you have. We just don't have in the West, and so that for us was a revelation, and also the warmth of hospitality. I was just talking to a friend just now, and it's almost embarrassing for us how you treat us so open-heartedly and lovingly and generously.
तो मेरे सवाल का जवाब उन्होंने ये दिया कि यू विल हैव टू म्यूट अदरवाइज इट इज इकोइंग, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो ही हैज गिवन अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर। इन्होंने बोला कि हम इंडिया में जिस चीज को ग्रांटेड लेते हैं कि हमारे पास इतना कुछ है, वेस्ट में ये स्पिरिचुअल डेप्थ नहीं है, और जब वो आते हैं यहाँ पे तो उसका अनुभव करते हैं। और दूसरा वो कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों ने जो ट्रीटमेंट दिया, जो प्रेम और खुले दिल से स्वागत किया, वो कहते कभी कभी बताते समय उनको एम्बैरेसिंग भी लगता है कि इतना ज्यादा प्यार और ओपन हार्टेडनेस जो यहाँ दिखती है वो वहां पे नहीं है। Since you traveled by road, rail, or even bullock carts, what were the biggest challenges you faced in your travel? Over to you. We traveled by rail and bus. There was the state bus, those old red buses, which were very primitive. But again, we had fun because it was all an adventure for us. It's not something we did every day. So we treated it like fun. And the most important thing is that there was, of course, hardship, but we didn't consider it so much like hardship because there was an atmosphere of enjoying your tapas. You know, when something went wrong, we saw the funny side, we saw it as a challenge, and we treated things with lightness. You know, I mean, because you can take things both ways. If you take everything seriously, then it becomes heavy. But if you treat things lightly, then you enjoy it. So even the most challenging thing was more amusing. तो इनका जवाब ये है कि हमने उसको एक एंजॉयमेंट के तौर पे लिया, एक चैलेंज के तौर पे लिया, क्योंकि वो रोज हम नहीं करते थे। बसेस में ट्रैवल किया और ट्रेन में ट्रैवल किया, और हमने उसको एक तप की तरह, तपस भी वर्ड उन्होंने यूज किया, तप की तरह लिया। और जब हम किसी चीज को एंजॉय करते हैं तो वो लाइट हो जाती है, और किसी चीज को सीरियसली लेते हैं तो वो हैवी हो जाती है। तो उसी माहौल में उन्होंने वो सब चैलेंजेस को उसी स्पिरिट में लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकोमोडेशन एंड फूड may not have been very comfortable and toilets may have not been available. How did you manage? What kept you going? Why I'm asking this question, because it was 1980s. The aim is not to ridicule the poor infrastructure we had that time in the country, but aim is to bring to forefront the Sahajogis from the West, from the developed nations, overlooking all discomfort and doing everything in love of Shrimataji. That is why I'm asking this question. What were the level of infrastructure, accommodation, toilets, and how did you manage? मैंने उनको जो सवाल पूछा है, मैंने बोला उस समय जब वो आए थे 1980s थे, वो गाँव में ट्रैवल करते थे, कोई अकोमोडेशन कैसा होता था, टॉयलेट कैसे होते थे, जैसा कि, और ये सवाल इसलिए नहीं पूछ रहे कि हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे देश में उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था। हम देखना ये चाहते हैं कि ये डेवलप्ड नेशन से आए थे, जहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज थी, वो छोड़ के वो किस वजह से ये सब आराम से सह जाते थे। ओवर टू यू। First, I must say that even in the villages, the Indians were incredibly generous and incredibly hospitable. They really laid on everything possible. Having said that, of course, the resources were limited in the villages at that time. We were eating off banana leaves sometimes, but they were always very generous. Like, as I say, that there was a mantra like Despande. There was a guy called Despande, I think, and he was always saying, eat slowly and more. And there was always more. There was always enough food. And then, of course, out in the villages, for so many people, I mean, maybe 100, 150 people, that we were just in tents, actually very, very similar to the Prayagraj camp, just tents with a mattress if you were lucky, and we had sleeping bags, and no toilets. I mean, sometimes there was a hole in the ground, but that was luxury.
तो उनका आंसर ये है कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये जो गांव में जाते थे, वो जो गांव के लोग थे, उनका प्रेम इतना भाविबल कर देता था इन लोगों को कि वो कुछ भी जो उनके पास होता था वो उनके सामने प्रस्तुत करते थे। और जो वहां पे नॉर्म था, जो कुछ भी लोग खाते थे केले के पत्ते पे, उस समय वो खाना खाते थे। और वो वहां पे कोई पांडे जी थे, वो कहते थे धीरे धीरे खाओ और ज्यादा ज्यादा खाओ, और वो रिसोर्सेज भी पूरे रहते थे। और उसी प्रेम में वो सारा कुछ काम इन्होंने निभाया। इन्होंने मेंशन किया कि अभी प्रयागराज में भी जैसे टेंट ही था सिर्फ, और एक डिटेल टाइप का टॉयलेट था, तकरीबन तकरीबन उसी टाइप का वहां पे होता था। और जो कुछ भी था वो प्रेम में और सबके साथ ग्रुप में उन्होंने कर लिया। आई एम जस्ट आस्किंग यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Despite these hardships, you followed Shimataji with full surrender. You did whatever she asked you to do. What is about her that made all these difficulties insignificant? मेरा क्वेश्चन ये है कि इतने जो भी उनको मुश्किल होती थी, चाहे वो महसूस करे या उसको ओवर नजरअंदाज कर दे, शिमाता जी के साथ में पूरे समर्पण से लगे रहे। उन्होंने शिमाता जी में ऐसा क्या देखा जो उन्होंने ये सारी चीजें आराम से सह ली? ओवर टू यू। I think there was two things. One, there was something magical about the tour, and being with the yogis, being with the Indians, you have to understand that for us to come to India is like being in paradise in a way. Even if because we're not interested in material well-being, at least the yogis, because we're seekers. We're seeking truth. We're seeking spiritual ascent. So we saw all this as part of our journey. We didn't come to India for comfort. We came to get away from the comfort, because in a way we knew that it was Maya. It was not leading us anywhere. It didn't bring joy, didn't bring satisfaction. So we enjoyed that adventure. तो उन्होंने ये कहा कि इंडिया में आना उनके लिए एक जादू के जैसा होता है, इट्स लाइक मैजिक। और वो जैसा एनवायरनमेंट था उसमें सारे योगीज थे, और वो यहाँ पे कोई आराम ढूंढने के लिए नहीं आए थे, वो सीकर थे। और वो उस माया से दूर हटके कुछ गहन करने के लिए यहाँ पे आए थे। इसलिए उन सब चीजों के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जो एनवायरनमेंट है। और इंडिया में आना उनको एक स्वर्ग जैसा लगता है। पैराडाइज इज द वर्ड हियर यूज्ड। जब वो भारत में आते हैं तो वो उनको लगता है कि हम स्वर्ग में। और क्योंकि योगी है तो वो उनका अटेंशन कभी भी मटेरियल चीजों पे नहीं रहा, और मटेरियल से दूर हटने के लिए ही वो उस सच को ढूंढने के लिए ही इंडिया में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द बिगेस्ट लेसन यू लर्नड अबाउट इंडियाज स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस? मैंने जो सवाल पूछा है कि भारत की जो आध्यात्मिक महत्व है, उसके बारे में सबसे बड़ा लेसन उन्होंने क्या सीखा? That's a very difficult question to answer, because there are so many things. But I think the biggest thing for me was that through your knowledge and your scriptures, you make sense of our lives. I mean, it gives meaning to life. Because in the West, we don't have meaning to life. For example, there's no reincarnation, there's no sense of tapas, there's no sense of dharma, or maybe a little bit of dharma in the sense of what is good and bad, but not that there's any benefit from it, or there's no reason to live a good life in the West. On the contrary, it seems in the West, it seems like only the people who are, let's say, not dharmic are the ones who benefit from life in the West. It's this Kali Yuga. And this is very shocking, because you ask yourself, why should I be good?
when the people who are not following, let's say, a dharmic life are, let's say, prosperous on a material level, and they seem to be successful. So this is a very important thing that we learned from the East, from India, that the importance of Dharma, the importance of living a good life, so that then you can get punyas, you can get benefits, and there is a spiritual value to this. तो उसका बहुत, उन्होंने कहा ये क्वेश्चन बहुत डीप है और इतना आसान नहीं है इसका आंसर देना। उनका ये कहना है कि हमारे देश में धर्म का जीवन का कोई मोल है और वेस्ट में जीवन का कोई लक्ष्य, कोई मोल नहीं है। और वहाँ पे जो लोगों का जनरली सोचना है कि जो लोग मटेरियल लेवल पे बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो लोग ये भी सोचते हैं कि हमने धार्मिक क्यों होना चाहिए, क्योंकि अधार्मिक लोग जो है, कलयुग है, वो ज्यादा प्रॉस्पर कर रहे हैं, तो हमने क्यों धर्म के ऊपर चलना चाहिए। लेकिन उसके जस्ट कॉन्ट्ररी इंडिया में दिखता है कि यहाँ पे धर्म का, पुण्य का कोई मतलब है और जीवन में सही रास्ते पे चलने का बहुत अर्थ है। The next question which I want to ask is about the Yuvashaktis. What is the, because you have been a Yuvashakti, what is the biggest lesson you learned as a Yuvashakti, and what is your message to the Yuvashakti of Uttarakhand today? तो मेरा क्वेश्चन है, आपने युवा शक्ति रह के सबसे बड़ा लेसन क्या सीखा, और आज जो हमारे युवा शक्ति यहाँ पे उनके लिए आपका क्या संदेश है? ओवर। As a Yuvashakti, the most important thing is that if you're in a group of people with your same age, same interest, same feeling of wanting to ascend spiritually, to know the truth, that's very special. At least it was to me. I don't think I would have found it very difficult if I was on my own. Again, I was the people, we were talking to the people in the Mahakumbh, the festival now that is in Prayagraj, and they were coming in groups. A lot of young people were coming in groups, and I was saying, you're so lucky because you have a group and you can help each other, you can work together, you can you know, if one has difficulty, then there's always someone who can encourage them or work on them. It's very, very special to have a group that you become more than friends, you become real brothers and sisters, spiritual brothers and sisters. This is so important. तो उनका आंसर ये है कि जब वो युवा शक्ति थे, उनको जो ग्रुप था उसमें एक जैसी सोच वाले लोग थे, सबको अपना आध्यात्मिक उत्थान चाहिए था, सब एक ही तरह की मेहनत करते थे। वो कहते अगर मैं अकेला होता तो शायद मेरी वो ग्रोथ नहीं होती, लेकिन क्योंकि वो ग्रुप में थे, सभी लोग एक जैसे ही भाई बहन की तरह रहते हैं और एक ही तरीके से वो अपना आध्यात्मिक उत्थान का प्रयास करते हैं, तो वो उनके लिए अच्छा हो गया। अभी कुंभ मेले का एग्जाम्पल दे रहे थे जहाँ पे बहुत सारे यंग बच्चे एक साथ आते थे ग्रुप में, तो उन्होंने उनको बोला आप बहुत लकी है, एटलीस्ट आपके पास में एक ग्रुप है जिसमें अगर आप थोड़ा बहुत नीचे भी जाते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई पूछता है आपको कि क्या हो गया, और आप सच में भाई बहन की तरह है, स्पिरिचुअल भाई बहन की तरह है। वो ग्रुप का मैसेज है, यही ग्रुप के लिए भी उनका मैसेज है। ग्रुप में रहिए जहाँ पे एक जैसे सोच वाले लोग हैं, एक ही हमारा लक्ष्य है जीवन में, ये उनका मैसेज है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the most important duty of युवा शक्ति in today's world? मैं उनको में युवा शक्ति की सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी क्या है? Again, this has to come from the individual, but for example, I was just, I had some very sad news today. One of my best friends, very old Sahaja Yogi, passed away. And we've been working tirelessly and
with devotion, dedication, as much as we can for so many years. But now, really, I believe it's time for the younger generation to take a lead and to take on the, don't want to say responsibility. It's or duty, because there's such heavy words, but it can be a joy if you treat it in the right way. It is a responsibility. It is it's a duty if you feel it, but it shouldn't be imposed on you. You shouldn't feel it is imposed on you, but you will get tremendous satisfaction out of spreading Sahaja Yoga, giving realization. There is nothing more enjoyable or satisfying in life. तो इस सवाल का जो उन्होंने जवाब दिया है वो ये है कि ये बहुत हैवी वर्ड है, ड्यूटी नहीं बोल सकते, और ये अंदर से आना चाहिए। ये एक जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी भी लादी नहीं जा सकती। इट कैन नॉट बी थ्रस्ट अपॉन एनीवन। ये खुद से आना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि, और उनके लिए एक बहुत दुख का बात आज ये है कि उनके साथ में पुराने एक बहुत सहयोगी जिन्होंने साथ में इन्होंने काम किया, वो आज उनका स्वर्गवास हो गया। हम सब प्रार्थना करते हैं श्री माता जी से कि उनको अपने चरणों में जगह दे। वो कह रहे हैं पुरानी जनरेशन, अब उनका टाइम हो गया है, तो नए जो युवा शक्ति है, अब टाइम आ रहा है कि उन्होंने फ्रंट में आना चाहिए और ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसको ड्यूटी की तरह से ना समझे, उसको जिम्मेदारी की तरह से समझे, और जब आप इसको करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा संतोष की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी जब भी हम ये करेंगे। The next question which I want to ask you, what qualities in a Sahaj Yogi truly please श्री माता जी? मैंने उनको सवाल पूछा है, क्या क्वालिटी आपके हिसाब से सहयोगियों के अंदर जो सबसे ज्यादा आनंद और खुशी देती है श्री माता जी को? That's a relatively easy question to answer. I think most people know the answer to this one. They're the qualities of Sri Ganesha. Number one, innocence, purity, wisdom, of course, joy, the love of the mother, devotion, dedication, unswerving attention. I mean, this is just look at Sri Ganesha and you'll know the qualities. इसका जो आंसर उन्होंने दिया है कि आनंद में रहने वाले लोग जो बहुत पवित्र है, शुद्ध है, जैसे श्री गणेश जी है, जिनका चित्त मलिन नहीं है, चित्त स्थिर है, और श्री गणेश की तरफ देखिए जैसी उनकी क्वालिटीज है, अगर वो क्वालिटीज हम इम्बाइब करते हैं तो श्री माता जी बहुत प्रसन्न होती है। कहते हैं ये रिलेटिवली बहुत इजी आंसर है इस क्वेश्चन का, और उनको लगता है ये तो सबको पता ही होगा कि श्री गणेश जैसे है वैसी अगर पवित्रता, शुद्धता, समर्पण है तो श्री माता जी प्रसन्न होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई want to ask you is, what is your advice for today's youth who struggle with distractions and overthinking? I'm sure it must be the same when you are a young Yuvashakti or before you came to Sahaja Yoga. So the question is, what is your advice for today's youth who struggle with distraction and overthinking? मैंने उनको सवाल पूछा है, आपकी युवा लोगों के लिए क्या एक एडवाइस को क्या बोलेंगे, हमने क्या उपदेश दिया या हमने कोई संदेश दिया या हमारा मैसेज है, जो भी ज्यादा भ्रमित है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और ज्यादा सोच विचार करते हैं, ओवर थिंकिंग? ओवर टू यू। I mean, no one should think it's just for them. I mean, even we have these problems of distractions and overthinking, so it's not just the younger generation. But of course, there are distractions, especially with the social media and internet and whatever. But I think the question we all have to ask ourselves, the fundamental question is, what is our priority in life? What do we really want? Where do you want to be when you are 50 or 60? Where do you want to be? What do you want to achieve? And
the answer will come. तो जो आंसर उन्होंने दिया है वो कह रहे हैं ये सबके लिए है, उनके लिए भी है, हमारे लिए भी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ युवा की नहीं है, सबकी है कि सबका चित्त डिस्ट्रैक्टेड है और ओवर थिंकिंग करते हैं। और उनका आंसर ये है कि हमें सोचना चाहिए कि जीवन में हमारी प्रायोरिटी क्या है। जब हम 50 साल के हो जाएंगे या 60 साल के हो जाएंगे, हमने क्या करना है जीवन में, हमारी प्रायोरिटी क्या है, तो वो शायद हमें आंसर मिल जाएगा, जिससे कि हमारा चित्त शायद शांत होके सही डायरेक्शन में लग जाए। The next question which I want to ask is, if today's Yuvashakti truly wants to serve Shrimata ji, what should be their top priority? मेरा जो सवाल है उनके लिए कि आज अगर युवा शक्ति सच में दिल से श्रीमाता जी की सेवा करना चाहते हैं, तो उनका जो मेन प्रायोरिटी होना चाहिए, मुख्य जो उद्देश्य होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? Over to you. I think the two sides here are the Ida Nadi and the Pingala Nadi. First, you need the desire. This has to be strong. Then usually something works out. But very often you have to put it into action. It's not enough just to desire. And it's not enough just to run around doing stuff without any kind of aim. You have to desire. And if you desire, this is the thing. There's no real point doing it if you don't desire, if you don't have, if you don't really want to do it, or if you don't do it with meaning. It has, whatever you do has to have meaning. So first of all, there has to be the desire and the devotion part. And then comes the action. So you pray to Sri Ganesha for the desire, pure desire, and you pray to Hanuman for the pure action, and see how you can help. I'm sure that if you have the right desire and the right attention, you will work it out. तो उनका आंसर ये है कि हमारे अंदर ईड़ा और पिंगला का जो गुण है, दोनों को हमने यूज करना है। हमें इच्छा भी होनी चाहिए और हमें काम भी करना है, और बिना इच्छा के काम का कोई मतलब नहीं है, और बिना काम के इच्छा का कोई मतलब नहीं है। तो उनकी एडवाइस ये है कि हम श्री गणेश को प्रे करें कि हमें शुद्ध इच्छा दे, और हम श्री हनुमान जी को प्रे करें कि हमें शुद्ध कार्य शक्ति दे। जब दोनों की ब्लेसिंग मिलेगी तो वो अपने आप काम वर्कआउट हो जाएगा। Your camera has got switched off. Sorry, yeah. So my next question is, how do you think today's Yuva Shakti can prepare themselves for प्रचार प्रसार? My next question is, उनको पूछ रहा हूँ मैं कि आपको क्या लगता है कैसे आज की युवा शक्ति अपने आप को सहज योगा प्रचार प्रसार के लिए तैयार कर सकती है? Over to you. I'm sorry, I didn't understand the question exactly, because it was it's a little bit of Marathi or Hindi or something. I didn't understand. So the question is, how do you think the Yuva Shaktis of today can prepare themselves for Sahaj Yoga propagation? I mean, very much the same as the previous answer, that it has to come from their desire. If they have the desire, fine. You can't make people do it, and you can't make people have desire. I mean, you can if you haven't got the desire, because we do where whatever our attention is on. So this is why Shimachi used to say the attention is so important, because whatever you put your attention on, you will go towards that, whether it's good or bad or whatever. So I would say the most important starting point is attention. Where is your attention? And then you will be drawn to it. Attention is like a magnet, and it will guide you. तो उनका कहना है, इसका आंसर भी पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है कि सहयोगा के लिए हम जबरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते, उनकी इच्छा होनी चाहिए अंदर से, और वो इच्छा के लिए भी हमें
श्री गणेश जी को प्रार्थना करना चाहिए कि हमें शुद्ध इच्छा दे और हमें हनुमान जी से शुद्ध कार्य शक्ति मांगनी चाहिए, जिससे हमारा अटेंशन, हमारा दिल उस काम में लगे जिससे श्री माता जी या हम प्रचार प्रसार से उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। ये हम जबरदस्ती नहीं करा सकते, ये इच्छा अंदर से आनी चाहिए, ये उनका कहना है। My next question is, how important is reading and increasing our knowledge about Sahaja Yoga to stay in Sahaja Yoga and help propagate Sahaja Yoga? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ाई, Sahaja Yoga के बारे में पढ़ाई करना, अपनी नॉलेज बढ़ाना कितना इंपॉर्टेंट है Sahaja Yoga में रहने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए? Over to you. Yeah, that's a good question, because at the beginning of Sahaja Yoga, especially in England, Srimati was saying no need to read anything, which actually is true. There's no need to start Sahaja Yoga. However, I found an interesting quote of Srimati more recently, and she said, in fact, the real seeking starts in Sahaja Yoga. So you need to be knowledgeable. You need to have the pure knowledge. When she said don't read, it means she really meant don't worry about all the false knowledge which we have in the West. Okay, and now there's a lot of confusion everywhere. But once you're in Sahaja Yoga, once you have vibrations and you have vibratory awareness, you can see what is pure, what is not. I mean, we know also the saints and the material which is written with vibrations. So it's important to also to have confirmation of what we're doing is the right path. तो इस सवाल का इन्होंने जवाब ये दिया है, शुरुआत में श्री माता जी ने बोला कि देयर इज नो नीड टू रीड एनीथिंग, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, और वो सही था क्योंकि वो बचाना चाहते थे लोगों को कुछ भी पढ़ने से। लेकिन बाद में इन्होंने कोई एक कोट पढ़ा जिसमें श्री माता जी कह रहे हैं डीप सीकिंग है, उसमें आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए, लेकिन जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर वाइब्रेशन है कि नहीं है, वो आपने कंफर्मेशन लिया है कि नहीं है कि ये सही है पढ़ने के लिए, तो आप उसको पढ़िए। अगर वो सही नहीं है तो आप उसको मत पढ़िए, कंफर्मेशन वाइब्रेशंस पे लीजिए। So with that, I come to end of my written down questions. Now I am asking impromptu. So why is it that people call you Pujari? अब मेरे जो लिखे हुए क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए, अब मैं जर्मी जी को पूछ रहा हूँ कि उनको कई सारे सहयोगी पुजारी बोलते हैं, तो over to you. Why? Why do people call me Pujari? Yes. Well, Srimati asked me to be a Pujari. And I was in Pujari in Italy for the pujas in Cabela for many years. तो वो कह रहे हैं उनको श्री माता जी ने पुजारी बनाया, और वो उनको पूजा जितनी इटली में कबेला में हुई वो सारी पूजा करते थे, इसलिए उनको पुजारी का नाम दिया। Anybody now? The house is not open for questions. Anybody can raise a hand and keep asking. Make the most of this opportunity. Whoever wants to ask anything can raise a hand. आप पूछ सकते हैं, डायरेक्ट आपने पूछना है डायरेक्ट पूछ सकते हैं, आपको ट्रांसलेट करा के पूछना है ट्रांसलेट करा के पूछ सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम आवर कोऑर्डिनेटर विक्रांत भैया, सबसे पहले आप, फिर रश्मि दीदी, फिर बाकी सारे। तो जब आप पूछ लोगे तो बाकी सारे तो पूछेंगे ही। Jai Shri Mataji Bhaiya. It is a very great pleasure to meet you online, and really thanks goes to Amar Bhaiya also. He has invited you, and we are very lucky to have the brother like you work with the Shri Mataji. Thank you so much for guide us, give your valuation suggestion for us. Thank you. I don't have any questions because I'm very extremely happy to talk with you, and I hope the small messages given by you is very beautiful and will guide us to in this spiritual journey. Thank you, Bhaiya. थैंक यू विक्रांत भैया। रश्मि दीदी, पूछो, आपको ही पूछूंगा मैं अभी बार बार। जय श्री माता जी। हाँ दीदी। भैया मुझे पूछना था हाँ कि युवा शक्ति को गाइड कर देंगे किस तरह से अपना ध्यान अच्छा कर सकते हैं। हाँ
क्योंकि अभी युवा शक्ति में जो उनका डीप मेडिटेशन है उसकी थोड़ा कमी है, ओके तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन। Okay. Rashmi Didi from Rudrapur wants to ask you, what is your advice, suggestion for Yuva Shaktis to go deep into meditation? It's a good question. I think we all would like to know the answer to this one. But I think the simple answer is, again, desire and pure attention. You sometimes, when I'm not meditating very deeply, I have to say to myself, look, come on, where is your desire? Where is your attention? What are you doing here? Don't waste time. You really have to desire. And sometimes that desire, you have to maybe strongly desire. It's almost force it a little bit, to show your determination. And really ask Srimataji, please put me in meditation. You have to really, there is no magic formula. You have to desire, and it depends on your relationship with Srimataji. And that's all I have to say on this one. तो रश्मि दीदी उन्होंने बोला बहुत अच्छा सवाल है और हर एक आदमी इसका आंसर जानना चाहता है, उसमें साथ साथ बोल रहे हैं इसका कोई मैजिक फार्मूला नहीं है, हर एक का अलग अलग रिलेशनशिप है श्री माता जी के साथ में। और पहला चीज वो कह रहे हैं शुद्ध इच्छा होनी चाहिए और श्री माता जी को प्रे करना चाहिए कि कृपा करके मेरे को ध्यान में उतारिए। और वो कह रहे हैं मैं भी खुद अपने आप को फोर्स करता हूँ कई बार, और अगर नहीं लग रहा होता है मेरा ध्यान तो मैं बोलता हूँ क्या कर रहे हो, क्यों ध्यान नहीं कर रहे हो। और कभी कभी थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है अपने ऊपर भी और श्री माता जी से प्रे करना पड़ता है, अपना डिटर्मिनेशन दिखाना पड़ता है कि हम ये ध्यान करेंगे। One question from Kritika Joshi is, just a second, it has come up in chat. Which book should we read so that we understand Sahaja Yoga and gain knowledge about it? From Kritika Joshi. Well, all the knowledge of Sahaja Yoga you can get from Srimataji's talks. But there are some books that also Srimataji recommends, like Adi Shankaracharya. But I don't know whether there's too much. There's nothing essential reading. All the knowledge is in the talks of Srimataji. There's actually no real need. The only reason to read outside is for comparison or confirmation. तो उनका आंसर ये है कि श्री माता जी की स्पीच में सब कुछ है, श्री माता जी की स्पीच सुन के हमें सब कुछ पता चल सकता है, बाहर हमें कोई ऐसा एसेंशियल रीडिंग का लिस्ट नहीं है। बाहर हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम कंफर्मेशन चाहते हैं, जो हमने सुना बाहर की दुनिया के साथ से कितना रेलेवेंट है, इसलिए हम वो पढ़ते हैं। नहीं तो जो कुछ भी हमें आंसर चाहिए वो सब श्री माता जी की स्पीचेस में मिल जाएगा। एनीबडी एल्स? हाँ अभी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन Harshit. Harshit is saying, has Shri Mataji told you about how to tackle with problems of left Swadhisthana, like effects of obstruction of the evil spirits, occult practitioners, black magic or false guru? Over. Just a common Sahaja Yoga knowledge. You have to clear your left side, especially with candle treatment, 3 candle treatment, with the madka, with even coconut. If it's a particular possession, Srimataji has given advice because it depends on the false guru. Luckily, I never went to a false guru, so I don't have any particular problem like that. But of course, you need to know what the problem is if it's a false guru.
Otherwise, just candle treatment, lemons and chilies, and coconut. तो इनका आंसर ये है कि क्योंकि लकीली वो किसी अगुरु के पास में या फाल्स गुरु के पास नहीं गए तो उनको ये प्रॉब्लम खुद महसूस नहीं हुई, लेकिन जो उन्होंने सुना है उसके हिसाब से नींबू और मिर्ची वाला ट्रीटमेंट, मटके का ट्रीटमेंट, कैंडल ट्रीटमेंट और कोकोनट से ये आराम से निकाला जा सकता है. One thing I would advise to everyone is something I do every day. I have a foot soak every evening, and this really clears the lower chakras. So you just keep it partly for prevention, partly for clearing out anything you've picked up in the day, but also to give you a good night's sleep. If I don't foot soak, I don't always sleep very well. So to make sure I sleep well, I have a foot soak, just clearing out all the rubbish of the day. तो उनका एक एडवाइस है जो वो खुद करते हैं हर दिन, वो विदाउट फेल फुट सोक करते हैं हर दिन. फुट सोक करने से लोअर जितने चक्र है वो क्लियर हो जाते हैं. कुछ पार्ट उसका क्लियरिंग के लिए है और कुछ पार्ट प्रिवेंशन के लिए है, जो कि हमारे को हेल्प करेगा अगर हम रोज फुट सोक करें. और फुट सोक करने से नींद भी अच्छी आती है. वो कहते हैं जिस दिन हम फुट सोक नहीं करके सोता हूँ मुझे नींद नहीं आती है. तो फुट सोक इज अ मस्ट. Anybody else wants to ask any question, you can raise your hand or write in the chat box. You can also ask me. तो आप मेरे को पूछ सकते हो, मैं ट्रांसलेट करके भी पूछ लूंगा. One has Ravish has written, I am suffering from optic nerve glioma which is slowly growing. Just a second, let me. I am suffering from optic nerve glioma which is slowly growing brain tumor. What can I do for the same? Over to you. I'm not a doctor, so what I would suggest is, again, you are very fortunate. You have the Sahaj hospitals in Noida and in Belapur, so you can ask their advice. You can. I'm not even sure. Some things have Sahaj treatment. I mean, Shimachi said, be very practical. For example, some people got very ill and didn't want to go to a dentist or a doctor. And she said, no, you must be practical. If you need to go to a doctor, you must go to a doctor. If you need to take antibiotic, you must take antibiotic. But don't just go to a doctor or take antibiotic if you don't need it. I mean, you have to use your hamsa. Some things are curable with Sahaja Yoga, some things are not. So if it's something which is very serious, you need to go and have serious treatment. So Sahaj, I mean, again, maybe you can get a miracle treatment, but there is no guarantee of miracle treatment. Shimachi said she gives to people who deserve it, not it's not a guarantee. So you have to use your hamsa. If you can clear with vibrations, fine. If you can't, then you have to go to a doctor. तो इसका आंसर जर्मी अंकल ने ये दिया है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो आपको एडवाइस, जो आप फॉर्चुनेट है, हम लोग लकी है, हमारे पास 2 ट्रीटमेंट सेंटर है, एक बेलापुर में है और एक नोएडा में है, जहाँ पे जाके हम दिखा सकते हैं डॉक्टर को. और शिमाता जी ने ये भी एडवाइस दिया है कि सहयोगियों को प्रैक्टिकल होना चाहिए. हर एक चीज सहयोगियों का जो ट्रीटमेंट है वो सारा कुछ जो है वो वाइब्रेशन पे हम नहीं करें, और जहाँ पे जरूरत है डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए. हो सकता है कोई मिराकल ट्रीटमेंट हो जाए और क्लियर हो जाए, लेकिन शिमाता जी ने बोला है जो भी सहयोगी आते हैं वहां पे जो डिजर्व करते हैं वो ठीक हो जाते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है. तो लास्ट में उन्होंने बोला है प्रैक्टिकल रहे, अपने हंस चक्र को यूज करें, डिस्क्रिप्शन को यूज करें, वाइब्रेशन से ठीक हो रहा है तो वाइब्रेशन से हो, नहीं तो हम डॉक्टर को दिखाएं एंड टेक अ प्रैक्टिकल अप्रोच. नेक्स्ट क्वेश्चन इज how do I recognize Mataji? Please tell more about recognizing mother. Over to you. That's a very interesting question. And my answer would be, how do you recognize your own mother? You recognize her because you know her, okay? You cannot recognize someone if you don't know them, all right? The only way we recognize
Srimataji is that we've known her in previous lives. So recognize means, it comes from Latin, reconoscere. Reconoscere means to re-know. So you can only re-know someone you've already known. You cannot recognize someone you don't know. Yeah. So you recognize your mother because you know her. You recognize your friend because you know them. If you don't recognize Srimataji, means you didn't know her before. Doesn't mean you can't be a Sahaja Yogi. This is very important. You can be a Sahaja Yogi without knowing Srimataji before, but you can only recognize her if you knew her in previous lives. तो इसका आंसर इन्होंने ये दिया है कि रिकॉग्निशन जो वर्ड है वो ये रिकॉग्निशन वर्ड है, ये लैटिन से आता है, जिसका मतलब है दोबारा से पहचानना, रिकॉग्नाइज की दोबारा से पहचानना। आप पहले से जानते थे, अब आपने उनको पहचाना। इसका मतलब हम सब श्री माता जी को पहले से जानते थे, हमारा रिलेशनशिप था और आज हमने उनको फिर से पहचाना है। जैसे हम अपनी मदर को पहचानते हैं क्योंकि हम उनको जानते हैं, इसलिए हम उनको पहचानते हैं। किसी भी नए आदमी को हम पहचान नहीं सकते, जान सकते हैं। रिकॉग्नाइज का मतलब हम उनको पहले से जानते थे, उसके लिए हम उनको प्रे कर सकते हैं और वो होगा। तो रिकॉग्नाइज का मतलब हम पहले से जानते थे, हम वो रिश्ता दोबारा से पहचानने का कोशिश कर रहे हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया तो हम सहयोगी नहीं हो सकते हैं। Next question is, I recently joined Sahaja Yoga. I am facing problem that I am not able to do Sahaj meditation daily. I can do for 2 days, then again for any reason I am not able to do. Please advise me, guide me. I didn't understand the question exactly. Is they can't focus on meditation? Not consistent. Can do meditation for 2 days and then leaves it, again 2 days and leaves it. So how do he get? How can he get continuously consistency in meditation every day? Okay. Again, it's up to you. There's no one forcing you. You are your own guru. This is one of the first things we say in Sahaja Yoga. Okay? I am my own guru. So it's up to you. No one's going to force you. You don't owe anyone anything. No one owes you anything. You do what you like. That's why I'm saying it has to be a priority. You have to see the importance. To see the importance, you have to see the benefit. And to see the benefit, you have to go a little bit deep sometimes. Sometimes, if you're lucky, you will get spontaneous benefit. But if you don't get the benefit, it's very difficult. I know. So you have to see somehow the benefit. I mean, either you see it in other people, you say, oh, I want that, or you feel the joy and you say, I want that again. Because at the beginning, it's like a honeymoon period. You get the joy, you get the benefits, but then sometimes that fades away and then you say, oh, where's it gone? You have to dig deeper. You have to really commit and be dedicated. तो इसका आंसर उन्होंने ये दिया है कि सहज योगा में हम खुद के गुरु हैं और हमको कोई दूसरा ध्यान नहीं करा सकता, हमें वो इच्छा खुद करनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा कि ये हमें क्यों चाहिए, इसका क्या फायदा है। इसके फायदे को जानने के लिए थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। हो सकता है हम किसी और को देखें कि इनको ये फायदा हो रहा है इसलिए मुझे चाहिए, या पहले मेरा ध्यान लगा था वो मुझे वापस से चाहिए। मगर क्योंकि हम स्वयं के गुरु हैं, दूसरा कोई हमसे ध्यान नहीं करा सकता, वो इच्छा हमें खुद लानी पड़ेगी और वो ध्यान हमको करना पड़ेगा। Message for unemployed student who want to attend Sahaja Yoga realization program. So this is one of the things that when we call students for attending some seminars or programs, one of the common problems is that right now maybe the parents are not doing Sahaja Yoga
and they are not employed, they don't have the money to spend on the travel and other things. What's your message for those who want, but they do not have the resources right now? Over to you. Sorry, it wasn't connecting. Yeah, that's a tricky one. And all I can say is, well, two things. Number one, we have an expression in English, where there's a will, there's a way. Okay, so if your desire is strong, it'll work out somehow. And then the other thing is, when we were going to India, of course, not everybody had the money to go to India. And Shimarchi said, if you don't have the money, don't come. It's not your time. Don't get into debt. Well, I mean, don't get yourself into a position that is a problem for you. If it's just a bit of money and you can pay it back in a few weeks, that's not a problem. But if you don't have the possibility, it means it's not meant for you at this moment. इसका आंसर उन्होंने बोला थोड़ा सा ट्रिकी है, और वो अपना एग्जांपल दे रहे हैं। जब वो लंदन से इंडिया भी आते थे तो कॉमन एक मैसेज शिमादा जी ने दिया था कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इस समय आपके लिए वो ट्रिप नहीं है। अगर थोड़ा कुछ पैसा है जो हम किसी से ले सकते हैं और आप लुटा सकते हैं तो ठीक है, मगर सहयोग के काम के लिए आप कर्जदार मत हो जाइए, आप किसी का कर्ज मत ले लीजिए। और हो सकता है कि ये ट्रिप आपके लिए नहीं है, नेक्स्ट ट्रिप में होगा, अपने दिल में इच्छा। साथ साथ उन्होंने एक और भी चीज बोली कि जहाँ पे चाह वहां पे राह, जहाँ पे देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो दोनों चीज बोला है, प्रैक्टिकल भी होना है, कर्जा भी नहीं लेना है। अगर अभी नहीं हो पा रहा है तो दिल में इच्छा रखनी है, जब वो सही समय आएगा तो वो हो जाएगा। Anybody else? Anything? आप पूछ सकते हैं, मेरे को डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। जैसा पहले भी पूछा वैसा हम दोबारा भी पूछ सकते हैं। इतने सारे बच्चे हैं जो बात करना चाहते हैं, आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। अभी भी हमारे पास 38 लोग हैं यहाँ पे। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब श्री माता जी साकार स्वरूप में थी तो उनका ऑरा कैसा था? मतलब उस समय पे आप क्या महसूस करते थे उनकी प्रेजेंस में? और अभी जब वो निराकार स्वरूप में हैं तो अभी क्या स्थिति आप महसूस करते हैं? So, okay. So his question is that when Shrimata ji was present in the physical form, how was her aura? What you used to feel that time? And how do you feel now when she is in Nirakar? What's the difference? We were very lucky, I must say, very fortunate to have this opportunity to be in her physical presence. It was something very difficult to describe. It's like being in heaven. When you were in the room with Shimachi, it was just so pleasant, and you just didn't want it to end. Now she's not here. In a way, even Shimachi said, I am more here when I'm not here. So in a way, the downside of when she was here in her physical form is that we were putting attention on her physical form, but that's not the real Adishakti. The real Adishakti is in the form of pure vibrations. She's in Nirakar form. So in a way, it's better to worship her in the Nirakar form. तो इसका आंसर इन्होंने ये दिया है कि हम बहुत खुशकिस्मत थे कि हमने श्रीमाता जी के साथ में जो समय बिताया उसमें श्रीमाता जी साकार में थे। जब हम उनके साथ होते थे तो वो बहुत अलग अनुभव है, उसका शब्दों में हम वर्णन नहीं कर सकते। और हम चाहते थे वो वक्त कभी खत्म नहीं हो। लेकिन अब जबकि वो नहीं है, कई बार उन्होंने बोला व्हेन आई एम नॉट देयर आई एम मोर देयर, इसका मतलब नहीं हूँ तो और भी ज्यादा हूँ। और जब वो हमारे साथ में थे
तो उसका एक नुकसान ये है कि हम उनके फिजिकल फॉर्म के ऊपर अपना अटेंशन डालते थे, उनके साकार स्वरूप के ऊपर, जो कि वो उनका सही स्वरूप नहीं है। उनका जो असली स्वरूप है वो निराकार वाइब्रेशन है। तो अब जो हम ध्यान करते हैं वो हमने करना चाहिए आदिशक्ति के असली स्वरूप पे, जो कि प्योर चैतन्य है। ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड इवन मोर ब्यूटीफुल आंसर। एनीबडी एल्स? कुछ भी, जिसको जो लगता है पूछो आप। This is our family. He might be sitting in Turkey. He's our brother. He has been with mother. Wow, it is rhyming. He's our brother and he has been with mother. So good. I think my Swadhishan is opening. And there's so many Yuva Shaktis here. जिसको भी जो भी लगता है कि उन्होंने क्या सीखा, क्या देखा, हमसे कुछ हम उनसे नॉलेज ले सकते हैं। आप अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। यू कैन आस्क अबाउट मिरेकल्स, यू कैन आस्क अबाउट मोर एडवाइस। So this is the opportunity and this is the beautiful world Shrimata ji has created up. देखो वो कहाँ के रहने वाले हैं, हम कहाँ के रहने वाले हैं। वो अलग कल्चर के हैं, हम अलग कल्चर के हैं। वो एक अलग कंट्री में बैठे हुए हैं, हमारे एक इनविटेशन पे आए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे युवा शक्ति जिन्होंने आज समय निकाला, आज यहाँ पे आए हैं, इसका पूरा फायदा उठाए और बिल्कुल बेझिझक होके, जैसे हमारे खुद के अंकल होते हैं, हमारे खुद के चाचा जी होते हैं, हम कैसे सवाल पूछते हैं, वैसे सवाल चलने चाहिए। तो आपको जो कुछ भी पूछना है, इसमें कोई क्वेश्चन सिली नहीं होता है। जो भी आपको इनोसेंस में पूछना है पूछिए। They're in thoughtless awareness. It's fine. Questionless awareness. So we'll pause for another 5 minutes. If there are no questions, then we'll pray to Shrimata ji and then we will call it off. I'm pausing here. Just think if you want to ask something. Reflect. Okay, then I don't think they have got anything. I just want to request you for your final words here to us, to the Yuva Shakti of Uttarakhand. What do you want to tell us? What is your advice to us? What have you learned in your life? It's very difficult to express it in words. As a Sahaja who has been continuously in Sahaja for 45 years. So how important is to just continue rather than going up and being thrown out? Everyone has their own path. But the Maya is getting stronger. When we started Sahaja Yoga, Srimachi said that time is very short, and we were told to leave everything, family, job, everything. Don't worry about anything. Just do Sahaja Yoga. And we thought that, like, in 5-10 years, the world would end because Srimachi was putting so much attention on us to spread Sahaja Yoga. But now it's strange because now we're still here after 45 years and the world hasn't ended. I don't know. But actually, and that was the other thing I was going to say, that Srimachi very often said that Kali Yuga was finished. I think that was more of a mantra. Kali Yuga is not completely finished. We're in this transition period of confusion still, and before we get to Satya Yuga, there must be a transition. We've done our best, but now it's up to you guys. I think our generation has really done its job. We were the foundation stones, a little bit rough and ready. Now it's time for another generation to really go ahead and spread Sahaja Yoga. You have tremendous powers. You don't realize how powerful you are.
because we were the cracked pots, we were the broken stones, but you are much purer, much more, let's say you have much more potential to make a bigger impact. So it's over to you guys. Good luck. But we're here. We're always here for you. If you ever need any help or advice, but yeah. तो उनका ये मैसेज है कि हमने जो हमसे हो सकता बेस्ट वो हमने किया। जब हमने शुरुआत किया तो श्रीमाता जी ने बोला कि अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो हमने नौकरी, घर बार सब कुछ छोड़ के हम लग गए और हमें लगता था 4-5 साल में दुनिया खत्म होने वाली है। और अभी हम 45 ईयर से सहयोगा में है और दुनिया चल रही है। और उनका ये भी कहना है कि उन्होंने एक बार ऐसा बोला कि कलयुग खत्म होने वाला है, तो उनका वो शायद एक अलग-अलग सेंटेंसेस जगह पे बोलते हैं, शायद वो मंत्र है कि कलयुग अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, अभी ट्रांजिशन चल रहा है, सतयुग में जाने से पहले एक ट्रांजिशन और होगा। और उनका ये कहना है कि हम तो नींव के पत्थर थे, हम टेढ़े-मेढ़े या टूटे-फूटे या क्रैक थे, जो भी थे। आप लोग जो युवा शक्ति हो, उनके अंदर ज्यादा पोटेंशियल है, आप अपनी शक्ति को पहचान नहीं रहे हो अभी। और ऑल द बेस्ट, और हम चाहते हैं कि आप इसको आगे ले चले, और आपके लिए हर समय हम यहाँ पे हैं। आपको जो कुछ भी हमसे चाहिए, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। So, on behalf of the complete Yuvashakti who joined here today, we are grateful to you that you came here and you spent time and you shared your memories with Shrimata ji, advised us on whatever experience you had, and you told us. And it is an honor to talk and have a conversation with people who were in physical presence of Shrimata ji. And I'm sure that you must have also relived those moments when you were talking about those moments and trying to explain how you felt in presence of Shrimata ji. All of us are grateful, and we thank you from the bottom of our heart. And in the end, we want to now thank Shrimata ji. She's the doer, she's the enjoyer. किसी ने कुछ बोला क्या बीच में? अभी कोई कुछ बोल रहा था क्या? So we want to thank Shrimata ji. She's the doer, she's the enjoyer, she is the creator, and we thank her for allowing us to have this meeting. We thank her for bringing this old gem of Sahaja in between us, sharing the experience. We all recollect what Shrimata used to say, that I worked for so many years in Sahaja in London, and I have 12, and these are the gems of Sahaja. So let us try our bit to do whatever we can to please Shrimata ji. With that, we now close the meeting today. Thank you once again. हम सब की तरफ से आपका धन्यवाद है, और future में भी we will try and reach out to you for some sessions like this with your permission. Thank you everyone. Thank you for joining in. Switch on your cameras so that I can take a photograph. I just want to take a photograph. Just a second. Thank you everyone. Jai Shrimata ji. Thank you. Thank you. Jai Shrimata ji. Jai Shrimata Jai ji. Shrimata ji. Jai Shrimata ji. Vikram ji. जय श्री माता जय जी। श्री माता जी। Jai Shrimata ji. Thank you. Thank you everyone. Thank you. Thank you very much. Shrimata ji. Jai Shrimata ji. जय श्री माता जी भैया। Jai Shrimata ji Ashish. Thank you. Thank you. माता जी भैया। Thank you. Jai Shrimata ji. Thank you Rashmi Didi. Thank you Vikram Bhaiya. जय श्री माता जी। Thank जय you. श्री माता जी भैया। Jai Shrimata ji Didi. Thank you.